Guys, we'll wait for 2-3 minutes and then we'll start. I hope meanwhile you guys have been practicing, and if you have any issues, please let me know. One more minute, we'll wait and then we'll start, guys. Okay, it's already 10:05, so we can start. Before we start, I understand that we had a long break, so I hope you guys have been practicing. You remember few things. I hope you haven't forgotten the basics. So before I proceed, anyone has any questions related to anything which we have been covering from these many days on any topic or storage or anything? If not, can you guys quickly, any one of you quickly tell me where we left, what did we do in our previous sessions? Just the brief, not in detail. Amit, do you remember? Sure. Actually, we were talking about storage, and I think different types of replication methods. So we created a storage account. Mm-hmm. If you not, we created a storage account. We are able to create a container and blob as well. Okay. And I think the last session was around this only, LRS or ZRS, which is the replication methods for storage. Right. So do you guys have any questions on that? Though we will have to cover that again. But still, do you guys have any questions? Did you try anything? Did you try reading? Did you try creating storage accounts? Yes, I tried creating storage account, and I first selected. I did, like you have said not to select the previous thing. I don't know what that word should we call, Soft the delete, are you backup. talking about? Yeah, the backup thing. So I selected that, and then I realized that we shouldn't have selected that. So yeah, And were you able to delete it later? yeah, I was able to delete it. Okay. So once you select a soft delete option, and if you create something that goes to soft delete, and if you have something in your recycle bin, then you cannot delete your storage account. We'll see that. I mean, even if you select, that is not a big deal or not a big blunder. That's fine. So let's start, guys.
I hope you remember all these. Whatever we read about storage, I hope you remember LRS, ZRS, GRS, RAGRS. We did this, right? GZRS and RAG, GZRS. It's a bit difficult to remember, but if you understand it well, then you don't have to remember it. उसको इतना mug up करने वाला चीज नहीं है. This is a concept you'll have to understand. So when we say LRS, it's just local redundancy storage. Okay, when I say local, in local we have only local backup, 3 copies, and this picture says itself. There are 3 copies locally. Now what does it mean local? Local से यहाँ पर मतलब है आपका कोई एक region, right? Let's say that I have created one storage account in East US. So there we will have 3 copies in one region. Okay, and one region which is not which does not have availability zone. मतलब इसमें data centers कितने होंगे? A region which doesn't have an availability zone feature, तो उसमें कितने data centers होंगे? Yes, one. Yes, guys, any confusion? I hope you haven't forgotten availability zone, availability set, right? I hope you remember that availability zone is something where in one region you have multiple data centers. Example, Pune region, if you have 3 data center, one in Magarpatta, one in Eon, one in Hinjawadi, so that is an availability zone. But Chennai or Mumbai region, where you have only one building, one data center, that doesn't have availability zone. Okay, I'm just giving examples, do not quote on these names. किसमें availability zone है, किसमें नहीं है, वो information update होता रहता है, that we can check on Azure's website. So LRS is something locally redundant, 3 replicas in one region, and it protects again disk failure, node failure, rack failure. uh, what do you think, guys? If my data center is down due to any reason, let's say now it was raining in Pune heavily, right? I have a region in Pune which doesn't support availability zone, and here I have storage account. If it doesn't support a zone durability, which means I'll have to go with LRS. So I have created one storage account with LRS, and now data center is in Eon Kharadi, and now due to rain that whole area is down. Maybe connectivity is down, cables टूट गए हैं, electricity नहीं है, जो भी जितने भी बैकअप थे, maybe 2-4 बैकअप थे, कोई गवर्नमेंट का था, टाटा था, रिलायंस, whatever it was, all of them are broken now. ISPs की भी कोई services नहीं चल रही है, so overall that data center is down. So what do you think, these 3 replicas which I have, will I be able to use one of them? Is this solution helping me in that case? This solution, is it helping me in that case if my data center is down? No. No, right? So in which cases is it helping? If one particular disk is down. So in that one data center, there are 3 disks they have created for one data. Let's say I have just saved one file. So they have created 3 disks. So if one disk fails, I will get service from other disk. If second disk fails, I'll get service from another disk. Rack failure से कैसे मिलेगा? Because these 3 disks, ये we saw it, right? I hope all of you remember racks कैसे होते हैं, अलग-अलग तरीके से racks होते हैं. So all of these 3 disks, ये किसी एक रैक में नहीं देंगे वो लोग, आप लोगों को अलग-अलग देंगे. रैक फेलियर का क्या मतलब हो सकता है? The definition which we read in availability set. Let's say there are 900 racks, तो 300 300 300 के 3 सेट्स बना रखे होंगे रैक के. तो आपके ये जो 3 कॉपीज बन रहे हैं, वो एक सेट में एक कॉपी बनेगा, दूसरे सेट में दूसरा, और तीसरे सेट में तीसरा. सो लेट्स से फर्स्ट सेट में जो ISP था और मे बी जो पावर कनेक्शन था वो चला गया, उस वजह से वो रैक फेलियर हो गया. But still, it is working against your rack failure. Why? Because 2 other copies, these are in 2 different racks. Is it clear? Yes. Yes. Okay, this is sort of revision. We have already done that, but because there was a huge gap, so I thought I'll quickly take a revision and then we'll start. Then we have ZRS. ZRS is
zone redundant storage. It's almost similar. Only the difference here, we have 3 copies in one data center, in one region, one data center. Here, one region, 3 different data center. Maybe this is Eon, this is Hinjawadi, and this is Magarpata. So now, because my data center, complete data center of Eon is down due to rain or something, I'm still getting redundancy. Why? Because in Magarpata, there's no issue. Magarpata is working fine. Or maybe Hinjawadi, that is working fine. Maybe these two are down, but one of the sites is working fine, and this is one region, guys, right? I'm not talking about the different region. Is it clear now? So even this has 3 copies, everything is same. Only a difference here is it is obviously protecting you against disk failure. How? एक disk fail हो रहा है तो दूसरा disk तो है ही आपका. It is obviously protecting you against a rack failure. यहाँ पर जो rack failure है वो भी यहाँ पर हो रहा है. How come? कि यहाँ पर कोई rack fail होता है इस zone में और आपका disk चला गया. Still आपके पास 2 disk है, different zone में ही है, different rack में, but it is supporting. Additional thing which it is doing is it is supporting, or it is giving redundancy against your data center failure. So if your data center fails, even your complete building is down, you'll still get your services or your database, because there are 2 separate buildings. Other than this, there are 2 more buildings जिनमें से service आपको मिल रही है. That is your ZRS. Okay. Then we have GRS. GRS से नाम से ही आपको पता चलेगा, it is geo redundant storage. Right. So geo का ही मतलब हो गया आपका region. Here it will have 3 replicas. इसी तरह का LRS की तरह से 2 कॉपी हो गई. एक let's say one in Pune, another one is in Mumbai. But you cannot decide कि वो कहाँ पर होगा. If one of them is in Pune, you cannot decide the second one वो कहाँ पर होगा. Second आपका जो है वो already decided है. Let's say that one is in Canada Central, so the replica is in Canada East. You cannot select कि यार एक replica, एक original मैं Canada Central में रख रहा हूँ LRS बनाकर, जहां पर 3 कॉपी हो गए, सब कुछ होगा, बट मेरा डेटा सेंटर डाउन हो जाता है या रीजन डाउन हो जाता है, उस केस में भी मुझको कुछ चाहिए. सो सेकेंड वन आई वांट इन वेस्ट यूएस. यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है, पेड रीजन ऑलरेडी बने हुए. यू कैन सेलेक्ट जियो रिडंडेंट GRS, बट देन वो इन्हीं में से कोई होगा. इफ यू आर इन कनाडा सेंट्रल एंड यू आर सेलेक्टिंग GRS, देन योर रेप्लिका विल बी हैपनिंग इन कनाडा ईस्ट. सो यहाँ पर कितने कॉपी होते हैं? 6 कॉपी हो गए. टिपिकली ये 300 माइल्स से ज्यादा होगा. सो डू यू थिंक जो मेरा पुणे में सेंटर है उसका GRS जो है पेड रीजन मुंबई हो सकता है? Yes, guys. We have a region in Pune. Do you think our paired region could be Mumbai? मतलब वो लिस्ट में तो obviously होगा, we can see that, but do you think it is possible looking at the difference and everything? So it could be, it cannot be. It is typically, ऐसा कोई set rule नहीं है कि 300 माइल से ज्यादा ही होगा, but yes they do follow. So I'm not sure पुणे का मुंबई है या नहीं है. We can go to the website and check that. बहुत easily हम check कर सकते हैं. Azure की website पे दिया होगा paired region. Just type Azure paired region and you will get कि कौन से region का paired region कौन सा वाला है. ठीक है, you will see that. So here you have 6 copies, 6 replicas in 2 regions. तो सिमिलरली यहाँ पर मतलब एक डेटा सेंटर भी डाउन होता है तो ये पूरे के पूरे तीनों डाउन हो जाएंगे, एंड देन यू विल गेट योर सर्विसेज फ्रॉम हियर. कोई एक रैक भी डाउन होता है यहाँ पर, वन इज गॉन. अगर इसमें आपको रैक पे ये मिला हुआ है तो यहीं से सर्विस मिलती होगी. यू वोंट हैव टू गो टू अनदर रीजन. But if your data center is down, then you will have to go to another region. I mean, you don't have to do anything. उसमें manually बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ता. ये सब जो है ना ऑटोमेटिक होता है. But you just have to understand the concept. Try to understand the concept, guys. ठीक है, जहां पे मैनुअल इंटरवेंशन है, हाउ डू वी डू इट, हाउ डू वी फेल ओवर, हाउ डू वी फेल बैक, दैट वी विल डू. तब मैं बताऊंगा आप लोगों को. यहां तक आप लोग सिर्फ मैनुअल पे ही बात कर रहे हो. दिस LRS यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग. यू आर नॉट पेइंग 3 टाइम्स फॉर अ डेटा. मैं एक MB की फाइल सेव कर रहा हूं, सो आई एम नॉट पेइंग फॉर 3 MB. ठीक है, आई एम नॉट डूइंग दैट, क्योंकि ये Azure अपनी तरफ से ये कर रहा है, अपनी तरफ से आपको हाई अवेलेबिलिटी ऑफर कर रहा है कि दैट इफ यू आर सेविंग डेटा विथ मी, सो आई हैव दिस फैसिलिटी कि अगर मेरा एक रैक डाउन भी हो जाता है, सो आई गिव यू द बैकअप फ्रॉम सेकंड रैक, आई गिव यू द बैकअप फ्रॉम थर्ड रैक. इस केस में हियर अगेन यू आर नॉट पेइंग फॉर 3. हाँ, बट यहाँ पर इनका डेटा ही महंगा हो जाएगा, डेटा सेव करना ही महंगा हो जाएगा. मे बी हियर फॉर 1 MB they were charging 1 rupee. Do not quote on price and numbers, guys. These are just for example. So here maybe they are
charging you 1 rupee for 1 MB, maybe they are charging 1.5 rupees for 1 MB. बट उसके अलावा ये जो रेप्लिकेशन दे रहा है इसके लिए आपको अलग से चार्ज नहीं करेगा, because this is Azure's USP, that if you take my ZRS service, I'm charging you only 1 rupee 20 paisa for 1 MB. But what is the benefit? That even if one zone is down or one data center is down, if you select Pune and I have 3 data centers in Magarpatta and Hinjawadi and Eon, and even if one of them, the building is down completely, I'm still giving you services. Same comes to GRS. Maybe here they are charging 2 rupees for 1 MB. Again, I'm saying do not quote me on numbers. इतना महंगा बिल्कुल भी नहीं होता है. इतना महंगा बिल्कुल भी नहीं होता. I'm just giving you examples. So here 6 replicas. If something happens to the Pune region, और ऐसा नहीं कि कभी नहीं होता, though it is highly unlikely, बहुत कम बार होता है, but if you just go and माइक्रोसॉफ्ट के सर्च वेबसाइट पे आप सिर्फ एक सर्च कर लो केस स्टडीज ऑफ रीजन डाउन, आपको दिख जाएगा कि कंप्लीट रीजन भी डाउन होता है, पूरा का पूरा पुणे रीजन डाउन है. इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई डिजास्टर ही हुआ हो, कोई फ्लड वगैरह ही आया हो. समटाइम्स कोई टेक्निकल इश्यू भी होता है जिसकी वजह से पूरा रीजन डाउन हो जाता है. So there are cases. So in this case, what they are saying that if you take GRS from me, even if my one region is down, your services won't be down. I will be providing services to you from Mumbai region, and they are not charging anything extra to you for this. Okay? हाँ, but यहाँ पर उनका base price ही ज़्यादा होगा. That does not mean Azure free में कुछ नहीं देगा. It's all business for them, for you, everyone. It's business. It's all about money. Charity कोई नहीं कर रहा है. And if everything is free, कोई इस पे जाएगा भी क्यों? आई मीन फॉर प्रैक्टिस के लिए भी क्यों ना हो, मैं सबसे महंगा वाला जो है इसी को लूंगा. इवन इफ इट इज फॉर प्रैक्टिस आई विल टेक दिस इफ इट इज इफ द कॉस्टिंग इज सेम. सो दे आर नॉट चार्जिंग सेपरेटली फॉर दिस, बट इनका बेस प्राइस ही यहाँ पर ज्यादा हो जाएगा बिकॉज यू आर सेलेक्टिंग GRS. सो मे बी 1 rupee 50 paisa for 1 MB and here you have this service. Now meanwhile यहाँ पर क्या होता है, ये तीनों भी जो बैकअप वगैरह है ना, ये रीड ओनली मोड में होते हैं. यू कैनॉट एक्सेस देम. ये डाउन हो जाता है तो ये अप होने में टाइम लगता है. ये बहुत ही ज्यादा एकदम फ्रिक्वेंटली नहीं होता है. ऐसा नहीं होगा कि द मोमेंट योर डेटाबेस इज डाउन और इमीडिएटली 1 मिनट में बैकअप आ गया. ऐसा नहीं होता है. हाफ एन आवर 45 मिनट्स कभी कभार लग जाते हैं उसमें. ठीक है, इतना टाइम तो लग ही जाता है. सो मीनवाइल लेट्स से दैट यू आर यूजिंग ZRS, आपका डेटा जो है सिंक्रोनाइज हो रहा है. ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, इट इज सिंक्रोनाइजिंग. यू आर राइटिंग सम डेटा, तीनों इसमें सिंक्रोनाइज हो रहा है प्रॉपर्ली. एंड नाउ सडनली यू आर गेटिंग सर्विसेज फ्रॉम zone 3 एंड नाउ सडनली इट इज डाउन. ठीक है, डेटा तो सिंक्रोनाइज हुआ. द मोमेंट इट वेंट डाउन, यहाँ पे जो डेटा था आपका, यहाँ पे जो आपने एडिट कर रखा था वो यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया. आपका डेटा इंटैक्ट है, बट नाउ यू वांट टू वर्क ऑन इट अगेन. तो एक थोड़ा टाइम तो लगेगा ही. हाफ एन आवर 45 मिनट्स लगता है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा, उसका साइज वगैरह, वो सब हम देखेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे. ठीक है, बट दोस 45 मिनट्स, अब उस 45 मिनट्स में आप बोल रहे हो कि यार यहाँ पर जो है ना मेरा एक बहुत क्रूशियल फाइल है, एडिटिंग वगैरह मैं बाद में करता रहूंगा, बट लेट मी जस्ट सी दैट फाइल और कॉपी दैट फाइल और डू समथिंग in that file. So that is not possible. You will have to wait. यहाँ पर आपको वेट करना ही पड़ेगा जब तक ये पूरा अप होता है. And then your, let's say this is your server, it is connected with this one and you are working, अपडेट कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, it's working fine. Suddenly this goes down and still because you have taken ZRS, सिर्फ एक डेटा सेंटर डाउन हुआ है, पूरा रीजन नहीं. ठीक है, तो यू आर गेटिंग सर्विसेज फ्रॉम हियर. लेकिन ये यहाँ से यहाँ मूव होने में जो टाइम लगता है 35-40 मिनट्स, उतना आपको लग ही जाएगा. उसमें यू कैन नॉट डू एनीथिंग. सिमिलरली हियर, यहाँ से आपको सर्विसेज मिल रही है, ये डाउन होता है तो 20-25 मिनट लगते हैं यहाँ से सर्विसेज मिलने में. ये डाउन होने के बाद उतनी देर यू कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट. बट द मोमेंट यू कम हियर, rest of the features are exactly same. GRS वगैरह में rest of the features are exactly same. जितने भी अभी हम लोगों ने GRS में देखे, RAGRS में भी exactly same है features. But the only difference is that meanwhile जब तक ये आपका यहाँ से you are getting services from here, now this is down and you will be getting services from here. इस बीच में जो 30-40 मिनट्स का ये है ना जो फॉल बैक होने का जो टाइम है, उस टाइम में you can access this database. How we'll see that later. I mean ये इसके थ्रू जो पूरा एप्लीकेशन पे अटैच होगा, आपका एप्लीकेशन अप होगा, अप एंड रनिंग होगा, आप उसको डेटा को एडिट करने लग जाओगे, वो सब होने में स्टिल 35-40 मिनट्स लगेंगे, जो यहाँ पर भी लगेंगे, जो यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा. बट यू विल हैव access to this data, only read access. It says read
एक्सेस। यहाँ पर आपको रीड एक्सेस भी नहीं मिलता है, ये डाउन हो गया, यू विल हैव टू वेट जब तक यहाँ पर आता है। एक बार एक्सेस मिल गया तब तो इसको आपको रीड एंड राइट दोनों एक्सेस मिल रहा है, ठीक है, दूसरे डेटा का। बट जो 35 मिनट्स का गैप है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट गैप, उस गैप में आपको कोई डेटा का एक्सेस नहीं मिलता है। उस गैप में आपको यहाँ पर 35 मिनट्स के गैप में, एंड इट इज नॉट एग्जैक्टली 35 मिनट्स, अगेन डू नॉट कोट मी ऑन दोस नंबर्स, वो हम देखेंगे एग्जैक्टली जब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। एंड प्रैक्टिकल में भी आप एग्जैक्ट नंबर नहीं ला पाओगे, इट डिपेंड्स ऑन द डेटा का साइज, कितने टीबी का डेटा है, कितने एमबी का डेटा है, बहुत सारी चीजों पर वो चीजें मैटर करती है कि आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसा है। देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स, राइट। एंड नो वन इज गोइंग टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि कितना टाइम लगता है, सिली क्वेश्चन होता है थोड़ा सा, ठीक है। बट वॉट एवर दैट टाइम इज, उस टाइम में यू विल हैव एक्सेस टू गो टू दिस डेटाबेस। और जो भी आप यहाँ पर कर रहे थे, लेट्स से दैट यू आर ड्राफ्टिंग, आप जो है ना एक इट इज अ लीगल फॉर्म, और आप एक केस ड्राफ्ट कर रहे थे, और मे बी आप एक अग्रीमेंट ड्राफ्ट कर रहे थे, एंड यू आर डन, you were almost done, everything was done, you just had to put a digital signature, और बहुत ही अर्जेंट है, राइट, बहुत ही अर्जेंट है, डिजिटल सिग्नेचर उसमें डालना था, एंड यू जस्ट हैड टू टेक अ प्रिंट आउट, एंड नाउ दिस डेटाबेस इज डाउन। इन दिस केस यू विल हैव टू वेट फॉर 35 मिनट्स, जब आप उस फाइल को फिर से एक्सेस भी कर पाओ। एक्सेस होगी तो रीड और राइट दोनों इसमें हो जाएगी इस केस में, बट यू विल हैव टू वेट, वो जितना भी टाइम लगता है ये सब होने में, फॉल बैक, फेल ओवर वगैरह सब होने में, यू विल हैव टू वेट। बट इन दिस केस यू नो कि उस डिजिटल सिग्नेचर को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ अपने एक स्टैम्प से, सो यू विल सिंपली गो हियर, कॉपी दैट फाइल, उसको फ्लैश ड्राइव वगैरह में लेकर आप प्रिंट आउट वगैरह लेकर उसके ऊपर अपने अपना फिजिकल सिग्नेचर कर दिए, एंड यू हैड टू गिव इट टू समवन, कोर्ट में सबमिट करना था, कहीं पर कुरियर करना था, कुछ भी करना था, यू आर डन विद दैट। जो 35 मिनट्स 40 मिनट्स आपको वेट करना था, उसमें तो आपने आपका काम करके सब कुछ करके उसको सेंड भी कर दिया, और मे बी यू जस्ट टुक द प्रिंट आउट, साइंड इट, and again scanned it and send it to someone over the email. So in that way you can access data, it is read access only. Is it clear, guys? Did you guys get it? Anyone who didn't understand anything, let me know. Yes, guys, what about others? Got two messages. What about others? Did you guys get it? किसी को कोई confusion Yeah, है? it's clear. Clear. Clear to everyone, I guess, right? Okay. Yes. So similarly, because I have explained it thoroughly, I think I won't have to spend time on this one. Similarly, यहाँ पर होगा, बस difference क्या है यहाँ पर? Let me clear this. Okay. See here, you had ये वाला हमने देखा था, GRS में क्या था, LRS के टाइप की दो कॉपीज थी, GRS 6 कॉपीज, बस उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है GZRS। तो इसमें जो है एक कॉपी तो बन रहा है आपके ऐसे किसी रीजन में जहां पर एक ही डेटा सेंटर है, और एक दूसरा कॉपी का सेट जो है वो बन रहा है किसी ऐसे रीजन में जहां पर 3 सेट है। थोड़ा सा और आपका ये हो गया, मे बी और थोड़ा सा आपको अच्छे रिडंडेंसी मिल गई, ठीक है। इसकी तरह ही एग्जैक्टली सिमिलर टू दिस, बट द ओनली थिंग इज दैट हियर both of these regions they didn't have availability zone feature। मे बी ये दोनों रीजन ऐसे होंगे जहां पर एक ही डेटा सेंटर है दोनों में, ठीक है, बट हियर यू हैव वन ऑफ द रीजन्स जहां पर आपके 3 जोन्स है। इज इट क्लियर? Yes, guys, are you getting it, or do you want me to explain this to you? I mean, picture says it very clearly, but still, if you want, I can explain it to you. Maybe we can draw some diagram, वगैरह. No, Anyone it's who good. is to know? But just a question. Yes, Amit. So how to decide which option to select? How means on like in production, how they decide which is the good option for our environment? You don't decide that. It is a job of your architect, and they don't decide it. Their job is to uh, discuss with application team. Most of the time, see, because the cost is involved here, right? This call will be taken by the application. जिसका भी application है, अब अगर मेरा कोई application है face app वाला, where you guys are just downloading my app, clicking your picture, and you upload your picture, and my app converts it, थोड़ा सा उसको कभी young कर देता है, कभी old कर देता है. Do you think I will go for this? इतने costly option के लिए जाऊंगा? Do you think वहां पर किसी का कोई crucial चीज है? कुछ भी नहीं है वहां पर, कोई डेटा नहीं है, कुछ नहीं है, right?
बट मे बी आई हैव अ बैंकिंग एप्लीकेशन जहाँ पे ट्रांजेक्शन करते वक्त भी एक पॉइंट का डेटा यहाँ वहाँ मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। मे बी आई हैव एन ऐप लाइक ज़ेरोदा जहाँ पर स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ जो एक सेकंड के भी डेटा को यहाँ वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते। उससे बियॉन्ड चले जाते हो मे बी गवर्नमेंट का जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है, या फिर मेडिकल इमरजेंसी वाले जो एप्स होते हैं, किसी भी तरह का एप्लीकेशन होगा उनका, मे बी पेशेंट का डेटा जहाँ पे दे डू नॉट वांट कि 1 मिनट का भी डाउन टाइम हो, जितना भी मैक्सिमम रिडंडेंसी मिल सके, दे आर रेडी टू पे। जहाँ पे पैसा नहीं, डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कम से कम डाउन टाइम। सो दिस कॉल विल बी टेकन बाय द एप्लीकेशन ओनर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई मीन बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, दैट इज फाइन। यू गाइस इम्प्लीमेंटेशन टीम में आप लोगों को सब इम्प्लीमेंट करना है, बट इंटरव्यू में जब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे क्या नहीं यार, आई डू नॉट इम्प्लीमेंट इट ब्लाइंडली, आई अंडरस्टैंड द आर्किटेक्चर। द मेन थिंग इज दैट इंटरव्यू में यही कन्विंस होना चाहिए कि आप लोगों को आर्किटेक्चर आता है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ स्पून फीडिंग किसी ने करा दी एंड दे गेव यू सम स्टेप्स, एसओपी दे दिया, क्लिक हियर क्लिक हियर क्लिक हियर। ये जॉब के लिए आपको कोई 12 और 15 और 16 नहीं देने वाला है एलपीए, राइट? सो यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड नो हाउ टू रीड एन आर्किटेक्चरल डायग्राम, और उसके बाद कि उसके बीच में लॉजिक क्या लगा होगा। एट दिस रोल में भी एडमिन वाले रोल में इम्प्लीमेंटेशन में यू वोंट हैव दैट चांस कि जहां पर आप डिस्कस करके उसको डिसाइड कर सको, यू वोंट हैव दैट चांस। बट इट्स ऑलवेज गुड टू नो इन्फॉर्मेशन कि हाउ दे हैव डिसाइडेड, आर्किटेक्चर टीम ने इसको किस तरह से डिसाइड किया होगा, एप्लीकेशन टीम के साथ वो किस तरह के क्वेश्चनर्स करते होंगे, एंड बेस्ड ऑन दैट दे डिसाइडेड। सो यू विल नेवर एवर डिसाइडेड कि कौन सा ये करना है, ये आपको हमेशा लो लेवल डायग्राम में आ जाएगा। आपको किस तरह का रिक्वेस्ट आ सकता है, दैट प्लीज क्रिएट 5 स्टोरेज अकाउंट्स, दिस शुड बी द रीजन, इस तरह का होना चाहिए, ये वर्जन होना चाहिए, इसमें ये चाहिए, सॉफ्ट डिलीट है या नहीं है, सॉफ्ट डिलीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आ जाएगा। उसके बाद रिडंडेंसी किस तरह की है वो आपको आ जाएगा। हाउ टू सेलेक्ट दैट, यस, वन वन थिंग, लेट्स से दैट आपको एप्लीकेशन डायग्राम में आ गया और मे बी आर्किटेक्चर डायग्राम में आ गया दैट यू हैव टू सेलेक्ट RAGZRS, दिस वन, बट हाउ टू सेलेक्ट दिस ऑन पोर्टल, ये आपको डायग्राम में नहीं आएगा, दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू। सो वहां पर हम ज्यादा फोकस करेंगे कि इन सबको सेलेक्ट कैसे करना है, हाउ टू चेक दैट, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बट इतना डिटेल में आपसे वैसे ही कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है? बट इट्स ऑलवेज गुड कि हम ज्यादा पढ़ ले। वी हैव बिन स्टडिंग बहुत ज्यादा, मतलब जितना एक एडमिन और इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको चाहिए आज तक हम कोर्स खत्म कर चुके होते थे, बट ज्यादा नॉलेज कभी हैम्पर नहीं करेगा, कभी हार्म नहीं करेगा। 2-4 हम टॉपिक्स छोड़ देते हैं और अगर वही इंटरव्यू में आता है तो वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक ये हो सकता है, ड्रॉबैक हो सकता है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सिमिलरली यहाँ पर है जो चीज यहाँ पर, ओके, समवन आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, टोटल 4 copies will get, right? Not exactly 4 copies, ये भी 6 कॉपी है, but yes, the way you call it is 3+1, but ये जो 1 भी है ना, ये एक भी जो है ये एक डेटा सेंटर में 3 कॉपी रखेगा, तो ओवरऑल 6 कॉपीज ही हो रहे हैं आपके, बट इट इज कॉल्ड 3+1, टर्म उसका 3+1 है। दिस इज, ये इस तरह से नहीं है कि एक कॉपी यहाँ पर है, एक कॉपी यहाँ पर है, एक कॉपी यहाँ पर है, और एक इंडिविजुअल कॉपी नहीं है यहाँ पर। This is your LRS. So how many copies do you have in LRS? 3 copies. So this is 3 plus 3, 6 copies. Good question, by the way. Okay. And then similarly यहाँ पर exact सारे features को यहाँ पर ये कर रहा है, बस यहाँ पर आपको again read access है. Is it clear? One more time is here, guys. Synchronize and asynchronize. So what is it? You guys can Google it. इसमें explanation वाली कोई बहुत ज्यादा ये है नहीं. Just word का मतलब आप ये कर लो, Google कर लो कि synchronous क्या है और asynchronous copy क्या है. एंड उसके बाद आप लोग पढ़ लो कि कहाँ कहाँ पर synchronous है, कहाँ पर asynchronous. I think यहाँ पर हम लोग से synchronous copy है यहाँ पर, और यहाँ पर synchronous copy है. इसमें भी 3 zones and asynchronous copy to secondary. इसमें synchronous data होगा, इसमें asynchronous होगा. So what is it? Just एक Google search पे आप लोगों को मिल जाएगा, but बहुत ही rarely पूछा जाता है इंटरव्यू में, but good to know. ठीक. So guys, we have 7 minutes left here. Anyone has any questions before we go to portal?
We did complete this one also, right? I hope you guys remember. I hope you guys went through this file and read this कि ये block क्यों use होता है, append block why do we use it, page block why do we use it. Okay, meanwhile if you guys do not have a question, I can cover this one. एक छोटा सा topic है, we can cover this. Anyone has any question, please let me know. अमित, इसाक भाई, इमरान भाई, समित्रा, योगेश भाई, any questions? All good. Okay. So access tier, what is access tier now? This you will understand अच्छे से और थोड़ा सा जब हम पोर्टल पे जाएंगे, और whenever we go to portal ये फिर से एक बार recap होने ही वाला है. So if you are not getting the theoretical part बहुत अच्छे से, it's okay, don't worry. जब पोर्टल पे जाते हैं तो ये theory फिर से पूरी रिपीट होने ही वाली है. So now there are access tiers and ये बहुत बार पूछा जाता है question. This is very important from the interview point of view. आप लोगों को तो काम के वक्त इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बिकॉज आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन आ ही जाएगी अगेन, ठीक है, दैट यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, वो आपके पास आ ही जाएगा. बट इंटरव्यू में डेफिनेटली पूछा जाता है. सो देयर आर एक्सेस टियर्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेस टियर्स? एक्सेस का मतलब है कि डेटा को आप किस तरह से एक्सेस करने वाले हो. जो भी मैं डेटा वहां पर रख रहा हूँ Azure के स्टोरेज अकाउंट्स में, जो भी मैं डेटा रख रहा हूँ उसकी कैटेगरीज कितनी है. सो देयर आर कैटेगरीज. वन कैटेगरी इज हॉट कैटेगरी. लिटरली मतलब दिखेगा, ऐसा नाम है उस कैटेगरी का, हॉट कैटेगरी. नाउ द हॉट कैटेगरी we use it for data which is accessed frequently and the higher the cost जो है इसका, आपका स्टोरेज का कॉस्ट है वो वहां पर हायर होगा, बट एक्सेस का कॉस्ट जो है वो लोवेस्ट होगा. hence this is useful, but I think you will not understand it essay, so let me open paint and then we can work on this. And to understand it well, you guys can open Azure calculator as well. वहां पर भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा. We'll do that post this next session, जो इस ब्रेक के बाद जो हम लोग शुरू करेंगे उसमें we'll go to Azure calculator also. But let me try to explain it here now. How Azure charges, Azure के charges आपको कैसे ये होते हैं, ठीक है. So let's say that you have a storage here. This is cloud, Azure है आपका. वहां पर आपका एक स्टोरेज अकाउंट है, ठीक है. सो यहाँ पर चार्जेस आपके डेटा सेव करने की भी होते हैं और एक्सेस करने की भी होते हैं, बिकॉज वेन एवर यू एक्सेस इट इज a sort of downloading and uploading. So let's say this is my storage account. Okay, storage account 1 and I'm planning to have 10 GB of data here. तो जो 10 GB जहां से भी मैं मूव कर रहा हूँ, yes, VHD is virtual hard disk. I'll explain it what is it exactly if you don't know, but yes, it is virtual hard disk. Okay, so जहां से भी मैं डेटा मूव कर रहा हूँ इसमें, let's say this is Azure and I'm moving data from AWS or I'm moving data from my on premises, या कहीं से भी जो भी सर्वर है मेरा, यहाँ से मैं जो डेटा मूव कर रहा हूँ that is वन टाइम चार्जेस. जो 10 GB का डेटा मूव होगा ना, उस पे एक चार्ज लगता है, बहुत ही ज्यादा नॉमिनल होता है. Azure का बिजनेस स्ट्रेटेजी है दैट वो डेटा मूव करने पे ऑलमोस्ट नहीं के बराबर चार्ज लगाता है. हाँ, आप जब डेटा वापस लेना चाहते हो ना, देन उसमें हाईएस्ट चार्जेस ज्यादा होते हैं. सो लेट्स से दैट यू आर मूविंग योर डेटा हियर फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस, यहाँ कहीं से आप डेटा मूव कर रहे हो 10 GB का, तो बहुत एक नॉमिनल चार्जेस होंगे, बट चार्जेस होंगे वहां पर. सो एक तो ये चार्ज हुआ आपका, ठीक है, और जिसमें आपने रखा है वो एक चार्ज होगा. इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग इट, कुछ तो चार्ज होगा ही उस पे, बिकॉज यू आर यूजिंग Azure का एक हार्ड डिस्क आपने 10 GB का ऑक्यूपाई कर रखा है. आर यू गाइस गेटिंग इट? 10 GB का हार्ड डिस्क आपने एक Azure का ऑक्यूपाई कर रखा है, तो ऑब्वियसली चार्जेस होंगे वहां पर. इवन योर वर्चुअल मशीन आप जब बंद भी करते हो तो आई टेल यू गाइस दैट के चार्जेस होते हैं वहां पर. क्यों? सी ड्राइव का जो आप यूज कर रहे हो ना, 127 GB का जो आपने डिस्क उसका ब्लॉक कर रखा है, Azure का स्टोरेज ब्लॉक कर रखा है, उसका तो Azure आपसे रेंट ले ही रहा है. सो सिमिलरली यहाँ पर एक चार्ज तो वो आपका वन टाइम जो ट्रांसफर आपने किया वो, दूसरा है जो आप 10 GB का स्पेस यहाँ पर आप यूटिलाइज कर रहे हो वो, एंड देन तीसरा चार्ज होगा आपका जो फ्रिक्वेंटली यूज होगा. अब डेटा को आपने रखा तो नहीं है ऐसे, राइट?
उस डेटा में मेरी पिक्चर्स है तो कोई पिक्चर्स अपलोड कर रहा है, कोई डाउनलोड कर रहा है, कोई डिलीट कर रहा है, या फिर कोई डेटा है, कोई एक्सेल फाइल है, उसको रोज आप अपलोड डाउनलोड एडिट वगैरह ही कर रहे हो। जो ये ट्रांजेक्शन है इसके भी चार्ज होते हैं। सो इज इट क्लियर गाइस इसके चार्जेस किस तरह से होते हैं? यस गाइस, इज इट क्लियर? चार्जेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो नेक्स्ट वाला टॉपिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आई मीन इसी का चार्जेस किस तरह से है। डिड यू are you guys getting it? We have 1 minute left. Let me see if I can open let me see if I can open Azure calculator. If this finishes guys, we'll start uh, the session without any break. Same link. Hardly 57 seconds are pending, so I'm not closing it. Let it get closed, and once it is closed, we'll start the session using same link without any break. See, region वगैरह हर चीज का डिफरेंस होगा, but LRS वगैरह यहाँ से भी डिफरेंस होगा, but we are not looking at that as of now. This is about to finish guys. Let's come back and join the same session.